Hello viewers, thank you for your support on Instagram. Welcome to my Guitar Seekho Series. I am Ghouse, 76. मैं 1968 से गिटार बजा रहा हूँ. शुरुआत ऐसे हुए. To tell you the beginning of my guitar, I went to learn English. The person who agreed to teach me English gave me a condition. He put a condition on the point that if I play the mandolin in his orchestra, for his orchestra, he will teach me English. तो बात यहाँ तक पहुँची कि मुझे अंग्रेज़ी सीखने के लिए मैंडोलिन सीखना पड़ा. तो मैंडोलिन के बाद मैं गिटार को शिफ्ट हो गया 2 साल के बाद. उसके बाद मेरी ख्वाहिश, मेरा शौक़, मेरा इंटरेस्ट आखिरकार इलैयाराजा तक ले गया. तो इलैयाराजा ने कहा कि इसको एक गुरु के पास बैठ के सीखना पड़ेगा. उनके पास उतना वक्त तो नहीं है, वो बहुत बिज़ी रहते हैं. तो वो कभी मैं जाता मद्रास या चेन्नई उस वक्त, तो वो क्या कहते कि आपके कोई डाउट्स हो तो बोलिए. मैं पूछता उनको ये मेजर सेवन्थ या माइनर सेवन्थ क्या होता है. उन्होंने कहा मेरे उस्ताद के पास जाइए जो बेंगलुरु में है, आप ही के करीब हैं, आपके हैं वो. तो मैंने उनका एड्रेस ले लिया. मास्टर जोसेफ उनका नाम है. ही इज़ नो मोर नाउ. तो उन्होंने मुझे उनका पता दे दिया. इलैयाराजा उन्हीं के पास वेस्टर्न म्यूज़िक सीखते थे, जो म्यूज़िक डायरेक्टर इलैयाराजा हैं चेन्नई में. तो उसके बाद मास्टर जोसेफ के पास कंटिन्यू किया. 2 साल में थ्योरी ऑफ वेस्टर्न म्यूज़िक सीखा. और गिटार प्रैक्टिस रमेश अय्यर जो आर डी बर्मन के गिटारिस्ट थे, ही इज़ ऑल्सो नो मोर, उनके पास गया फिर गिटार सीखने के लिए. तो महीने में एक बार, 2-3 महीनों में एक बार जाके मैं रमेश अय्यर साहब के पास गिटार शुरू किया. और उसके बाद शुरू किया यानी जैज़ म्यूज़िक शुरू किया. 2 साल तक उन्हीं के पास प्रैक्टिस करता रहा. तो मैं समझता हूँ हर अच्छे गिटारिस्ट या म्यूजिशियन के लिए इस तरह की तगदो भाग दौड़, शौक़, प्रैक्टिस, रेगुलरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट, हम ये नहीं कह सकते कि गिटार अच्छा नहीं बज रहा है, तो हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है. वो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. वी नीड टू नो मैनी ऑफ द बेसिक्स ऑफ द गिटार. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लेक्ट्रम किसको कहते हैं, इसको कैसे पकड़ना है. जैसे ये देखो, फर्स्ट फिंगर एंड थंब के दरमियान पकड़ो. और गिटार रखने का तरीका, द वे द सिटिंग पोस्चर इज़, ये जो कर्व है इसको थाई पे रख दो. और फिंगर बोर्ड, इसको हम फिंगर बोर्ड कहते हैं. और फिंगर बोर्ड ऐसे हो के जो नज़र आए, ऐसा नहीं, नज़र आना चाहिए. इसको ऐसा बैठिए और ये हाथ ऊपर से लाइए. गिटार को हग कीजिए एज योर बेस्ट फ्रेंड. हग करके पुट द रिस्ट बिहाइंड द ब्रिज, इसको ब्रिज कहते हैं. इसके पीछे रखो. थंब और फर्स्ट फिंगर के दरमियान पकड़ो. दिस ग्रिप will change as you go on practicing and experiencing. Now coming to the left hand, we use only 4 fingers. Thumb is rarely used by advanced players on the acoustic guitar. For example, see here, I use the thumb here. This is not traditional. Now coming to the fingers, play the guitar with the fingertips. You should bend the fingers here. See this. Now coming to the first part of the guitar learning is, you should know the names and numbers of the guitar. For example, count the numbers from the bottom. 1 2 3 4 5 6 strings are there. To remember the names E, A, D, G, B, E. How to remember them? Elephants and donkeys grow big ears. I repeat, elephants and donkeys grow big ears. E, A, D, G, B, E. Now coming to the section of what to practice, how to begin. I have been receiving many questions on how to practice, how to begin, what to learn, and so on and so forth. I'll tell you, there are only 3 things to learn. One is the theory of music. You should know the principles of music. The second one, chords, that is harmonization, technical term, with strumming. The last one is how to play the songs, that is lead guitar. I'll give you
a brief introduction to theory of music. Theory means principles. What are the principles? For example, if you are singing a song in F major, पिया 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 मेरा जिया पुकारे हम भी चलेंगे. This is not A sharp, this is B flat. Many of the guitarists call it A sharp. This is wrong because the principle is major key. F major key is a flat key. This is named as B flat. This is called principles of Western music. For example, another principle I'll give you. If a song in G minor, you can make it major also. What is the rule? You can change a minor chord into major. For example, Asha Bhosle and Mahendra Kapoor. धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया जो तुम मेजर मुस्कुरा दो minor जो तुम मुस्कुरा दो. See, the rule says you can make a minor chord major. So these are the two examples I have given you. Next, coming to strumming and chords. What is a chord? Minimum 3 notes played at the same time is a chord. D, C, E. So a chord is a combination of 3 notes. Now coming to the types of basic chords: minor, major, 7th, or major, minor, 7th. Now chord is, for example, this is a chord. Now strumming is rhythm, that is tempo or strumming like this. This is a chord played at the same time, minimum 3 notes. But if you take any tempo, rhythm or ताल कहते हैं जिसको हिंदी में, उसको ले लो. जैसे तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे सपनों की दुनिया में मिलके चले थे. These are chords. What is strumming? तुम्हें याद होगा कभी हम मिले सपनों की दुनिया में. This is called ताल. So chords and strumming form one section. Now coming to lead. If you play any song, तुझे देखा तो ये जाना सनम, this is lead. So every good student should begin with theory of music, lead and chord and strumming. This will be explained to you in every one of my videos. I'll cover all these 3 sections or chapters in my forthcoming videos. For example, take today's lesson. First, I'll begin with the structure of the guitar, important points. The metal piece here is given. This is called fret. Fret number 1, 2, 3, 4. I have 19 fretted guitar. At least buy the guitar which has at least 18 frets, 18 to 19 for a beginner. Now coming to the fingertips and how to put them on the strings. See here, put down the fingers on the strings just behind the fret, not like this. This is far. See, this is not on the fret. Now coming to this one, learn this chord. It appears on the top. E minor chord, the simplest chord. See here, E minor. See my right hand. Don't beat. It's like a child. Your guitar strings, don't beat them. Slide. See them? This is E minor. Put down the first finger on the 3rd string, it becomes E major. Remove the 3rd finger, it becomes E 7th. I'll play them again. E minor, E major,
Put down the first finger on the third. Remove the third finger, it is E7th. These practice you have to practice regularly. Now, I'll give you the secret of my playing the guitar is I practice regularly. I sleep at 2 o'clock, dead of night. That is, after 12 midnight, I sleep always. I take my guitar, I speak to it, I practice on it, I refer to doubts. I am still a student. E minor, E major, E7. Okay, thank you for watching.